हाउ टू डू PYQ एनालिसिस फॉर प्रीलिम्स। कितने साल की PYQs करने होते हैं, कितनी बार करने होते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक यूज ऑफ PYQs, एंड एक्चुअली हम PYQs करते ही क्यों हैं। So all of these questions you might have, and I'm Arpit Singh. I appeared for the interview for CSC 2025, and I'm expecting around 110 plus in prelims this year, as per most answer keys. इससे पहले भी एक बार मैं prelims clear कर चुका हूँ, and I just want to answer these questions based on my understanding. So let's come to the first question कि देखो PYQs हम करते ही क्यों हैं, and for that first I want you to take a look at the syllabus here. So देखिए, दिस इज द सिलेबस फॉर यूपीएससी जो यूपीएससी ऑफिशियली बताता है। लाइक फॉर इट जस्ट सेज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी में एंड गवर्नेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड व्हाट यू विल नोटिस इज इट इज़ वेरी ब्रीफ, इट इज़ वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, एंड अगर हम इसको अच्छे से करने लग जाएं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. So the first purpose of PYQs is to define the outlines of the syllabus. Now you might ask कि ऐसे तो इसको एक एक करके मैं करूँगा, तो should I really start from the scratch? Should I actually look at all the PYQs? So the answer is no. See, the first level of syllabus identification is already done by your core books. आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जो आप शंकर IAS से PMFIS पढ़ते हैं एनवायरमेंट के लिए, they have already done this homework. Their entire content of the book is curated as per the syllabus that is given by UPSC and what is presented in the PYQs. उसी का extrapolation करके उन्होंने अपनी किताबें बनाई हैं. In fact, as you notice, if you have seen multiple editions of these books, जो latest books होती हैं, जो latest revised editions होती हैं, उसमें वो यही PYQs में जो नए questions आते हैं उनको incorporate करते हैं. So that kind of homework is already done for you. But here's the difference. These books are being read by all the aspirants. इनको पढ़ना तो आपके लिए it is necessary. You have to read them to stand at par with the competition. But you also want to get ahead of the competition. So that is why we take a look at PYQs and then we basically make our own understanding कि कैसे I can widen my knowledge. So what is UPSC asking? Let me note it down, and then let me include more things in the in what I'm trying to cover for this exam. For example, let us look at some PYQs. So this is a 2018 PYQ. इसमें लिखा हुआ था कि he wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, and Sri Krishna. Stayed in America, elected to Central Assembly, and इसका the answer was लाला लाजपत राय. So ये PYQ मुझे क्या बताता है? First of all, it tells me some facts about Lala Lajpat Rai. It also tells me some facts about these other personalities. It also tells me one more thing that, okay, what personalities are important for UPSC, what personalities are important. Now, इस question में तो all of these dignitaries, like we all know them, they are very famous, they're all important. But let us say इन चार options में से एक ऐसा option होता, one person was not so well known. So that would have given you a clue. Okay, now this person has appeared in one of the options. Maybe I should read more about this person. And one bigger understanding from this question is that UPSC actually does ask questions about what books people have written, what books different freedom fighters have written. And if you look at some other PYQs, ये देखिए 2025 का PYQ है, and इससे पहले 21 का PYQ था. So they are about either books or what someone has said. So 2025 ka PYQ was about what Gandhiji said, and 2021 ka PYQ was about a book that was written. So again, these PYQs are telling us where to read more, how to go beyond हमारी जो core books हैं. I'll take one more example. Look at this 2021 का PYQ. So इसमें क्या बता रखा है? With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence? So this was a very common way of division of administration. जो administration hierarchy थी मुगल्स के टाइम में, उसमें ये follow होता था. So immediately this gives me a clue that if I have to know this, I should also know this for other important kingdoms. I should know this for how the kingdom was divided into, what was the administrative divisions under Mauryans, under Guptas,
अंडर द विजयनगर किंगडम एंड सो ऑन. सो अगर मेरे जो कोर बुक है, मेरे जो कोर सोर्स है, अगर मैं उसमें ये चीज़ कवर नहीं है तो मैं इसको एडिशनली करूँगा. ऑल्दो ये मेजरली कवर होता ही है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. नाउ वन मोर थिंग, इतने सारे PYQs हैं, हम इतने सारे सालों के PYQs कर रहे हैं. डू आई हैव टू डू दिस फॉर एवरी क्वेश्चन? अगर मैं हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने लग जाऊं कि इसमें मैं और कैसे अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर सकता हूं, इट इज लिमिटलेस. So no, you have to be smart about this. So take a look at this PYQ. So this was about 2016 ka PYQ. It was about payment banks. Now, payment banks, they still exist in India, but are they so relevant? Given so much that has happened in the digital space and how we engage, how we do digital transactions today, payment banks do not hold the same kind of relevance that they used to in 2016. अगर इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है करंट अफेयर्स में, आई रियली डोंट नीड टू नो अबाउट दिस इन डिटेल. नाउ लुक एट दिस अनदर PYQ. ये लास्ट ईयर का PYQ था अबाउट AI एक्शन समिट. सो डेफिनेटली आई वुड से इस साल के लिए तो इट वाज इंपॉर्टेंट, बट इमेजिन इफ समवन इज प्रिपेयरिंग इन 2028, 2029, do you think this action summit will be that important? Maybe there is, in the same action summits, continuation में कुछ 5th, 6th, 7th समिट हुआ होगा जब भी फ्यूचर में, उस टाइम पे वो इंपॉर्टेंट रहा होगा. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको 4-5 साल पहले एग्जैक्ट क्या हुआ था, स्पेशली इन अ फील्ड ऑफ AI जिसमें हर साल इतना कुछ डेवलपमेंट होता है, हर साल के हर महीने इतना कुछ डेवलपमेंट होता है, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अगेन देन देयर अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत पुराने PYQs देखेंगे, उसमें आपको सेल्स टैक्स की चीज़ें मिल जाएंगी. नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट इन द पोस्ट GST फेज. And you probably will find some details, exact questions asking about exact details of 14th Finance Commission. I would again say they are not so important anymore. 15th आ चुका है. In fact, इस साल budget session में 16th Finance Commission के the details, the recommendations of that commission, they will be laid out in the budget session. So 14th Finance Commission का इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है as per me. So this is how you use PYQs to expand the content, expand the area that you want to cover, expand the syllabus that you want to cover, and get ahead of the competition. But again, do it smartly. Now, there's another area where PYQs really help us. देखिए, PYQs, they help us understand the authoritative answer to some questions. चलो मैं आपको 2 PYQs दिखाता हूँ. So, ये 2017 का PYQ था. Right to vote and to be elected in India is इसका आंसर है, it's a constitutional right. It is not a fundamental right. Now at this point of time, everyone will give the answer कि हाँ, इसका आंसर तो C ही होना चाहिए था. It is a constitutional right. Every teacher will say that, every book will say that. But imagine 2017 से पहले, this thing, like, you can understand this. By your own understanding, you might know कि right to vote is a constitutional right, but शायद ये अलग से कहीं लिखा नहीं हुआ होगा, as a fact नहीं लिखा हुआ होगा. There are two different things. See, knowing something and knowing something so well that you can actually answer a prelims question in the exam is different. So now, because UPSC has provided an authoritative answer on this, everyone can feel confident and tick this. अगर ऐसा कुछ, this information is used in a future question, आपको पता होगा. Again, look at this other question. I remember, so I gave 2023 ka prelims. So I do remember when this question came, there was a lot of confusion among different people. किसका actual answer क्या होना चाहिए? And there was a debate about different options. But finally, UPSC के answer की से option A was given as a right answer. Principle of natural justice. Now see, UPSC is not an interpreter of the constitution. वो जो भी क्वेश्चंस बना रहा है, इट इज रेफरिंग टू सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और सम अदर कमेंट्रीज, जुडिशियल कमेंट्रीज. बट we don't have, as aspirants, we don't have the time to go through every judgment that has happened and so on. But once UPSC has given an answer, and until we see in the news कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को reinterpret किया है, this becomes the authoritative answer for us. It's good now that they have provided this information to us. अब हम इसको याद कर सकते हैं and future के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं.
नाउ सो दिस वाज अनदर यूज केस ऑफ PYQs कि आपको अथॉरिटेटिव आंसर मिल जाता है. There is another place where PYQs are important. So, for example, it helps you identify the important themes. अब जो आपने सुना होगा लोग कि काफी कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस. देखिए, कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं करता है. व्हाट वी डू इज वी लुक एट क्वेश्चंस एंड वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हमारे एफर्ट्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा जाने चाहिए. एंड जब वो डायरेक्शंस जो जहाँ पे हमारे एफर्ट्स गए, इफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दोज एरियाज, देन वी फील हैप्पी एंड देन वी से कि हमने प्रिडिक्ट कर दिया. प्रिडिक्ट कोई नहीं करता है, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर or in the last few years, if you see the PYQs, for example, will see a lot of questions on biodiversity, especially like various species. कोई भी species आती है तो उसके कुछ attributes के बारे में क्वेश्चन आ जाता है. एंड 2021, 22, 23, 24, 25 हर साल इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो नेचुरली लास्ट ईयर व्हाइल आई वाज रीडिंग एनी करंट अफेयर्स सोर्स, एनी न्यूज़पेपर और एनी करंट अफेयर्स मैगजीन, तो जब भी मेरे को कोई स्पीशीज मिलती थी, मैं उसका अलग से नोट डाउन करता था. व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट स्पीशीज, सम इंपॉर्टेंट बिहेवियरल ट्रेट्स. अगर मेरे को गूगल करना पड़ जाए, विकीपीडिया करना पड़ जाए, सो आई वुड नोट इट डाउन. सो आई हैड दिस सेपरेट थिंग फॉर स्पीशीज. Similarly, I had a separate thing for places in news. And similarly, for important themes like Jainism and Buddhism, I have done some extra homework to prepare these topics beyond जो भी मैं source use करता हूँ, because UPSC does ask from these areas. So this was about the relevance of PYQs. Finally, you will have a question कि कितने PYQs करने चाहिए, कितने साल के PYQs करने चाहिए. Again, I would say पिछले 10-12 साल के PYQs, like 2013 onwards is enough. उससे पहले जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है. There are two reasons for this. First reason is a lot of it is irrelevant, especially with respect to polity and economy. जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो आज में रेलिवेंट नहीं होंगी. एंड फाइनली सेकंड रीजन इज whatever is there in those old PYQs, anyways वो सब कुछ आपके सोर्स मटेरियल में कवर हो चुका होगा. Every book, every set of notes out there will cover such old in use. Agar if that information is useful, it will be covered in your notes or your books. So that question is answered. Next question. So now I'll just give you an example to walk you through. So I have given a lot of information. Now let's just take through an example कि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो how to apply this knowledge. Now let's say मैं अभी इस टाइम पे let's say I'm reading polity. Okay, I read polity. मैंने अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ी, और भी कुछ मेरे पास कोर बुक है वो मैंने पढ़ी. And then I start to look at the PYQs topic wise. And let's say I come across this PYQ. So 2023 का PYQ था कि in which one of the following constitutional amendments it was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights. So अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने लास्ट ईयर किया था. What I realized is, yes, I know amendments are important, and yes, I know fundamental rights are important, and yes, मैंने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं कि कब कब कौन सा fundamental right amend हुआ है, but not in enough detail कि मैं उसको एग्जाम में आंसर कर पाऊँ. चीज़ें तो हम बहुत पढ़ लेते हैं इन किताबों में, बट उसको अलग से जब तक हम उसका कुछ नोट्स नहीं बनाते या उसको टैबुलेट नहीं करते, वी आर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको आंसर कर दें. सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट थ्रू ऑल द फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 16, 19 जो भी अमेंड हो चुके हैं. 21 जितने भी आर्टिकल्स अमेंड हुए हैं इसमें, वो कब कब अमेंड हुए थे, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था एग्जैक्टली. आई रिमेंबर्ड दिस, आई मेड एन एफर्ट देयर. सो व्हाट यू कैन डू इज एज यू गो थ्रू PYQs, यू कैन मेक अ नोट. जैसे आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको ये PYQ दिखा, आप एक जगह नोट कर दीजिए कि दिस इज अ टास्क दैट आई कैन डू टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ टू गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन. नाउ आप उसी आइटरेशन में करें कि नहीं करें, दैट इज अप टू यू. दैट इज अप टू कि आपके कितने बाकी सब्जेक्ट्स को में कितना टाइम बचा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. अगर आप कोर बुक से ही कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं, जो आपकी सोर्स मटेरियल है उससे कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस एडिशनल एक्सरसाइज यू माइट नॉट बी एबल टू डू, बट एटलीस्ट नोट इट डाउन. Because it's also possible that in future iterations, as the exam gets closer, instead of just doing the same thing which is not benefiting you, you can do this to stand apart from the competition. Finally, one more way of making use of PYQs is when you do mocks. देखिए, आप मॉक्स जब सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो
are not exactly useful for you. Obviously, अगर कोई मॉक में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है एंड इट इज रेलेवेंट टू द सिलेबस, तो मैं उसको नोट डाउन करूंगा. बट लेट्स से, सो आई मेड अ मॉक क्वेश्चन. जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. सो ये नेटो के बारे में है. ठीक है, नेटो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, आईआर के भी क्वेश्चन आते हैं. सो दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं. अब पहला स्टेटमेंट एंड तीसरा स्टेटमेंट आर प्रिटी वेल नोन. पहले वाला इज वेल नोन, थर्ड वाला इज करंट अफेयर्स समवट रिलेटेड. सो दीज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. And second statement is also correct, because actually France was once, so in 1966 it withdrew from NATO's integrated military command structure. तो ऐसा कुछ हिस्टोरिकल कुछ चीज़ हुई थी. बट अगर मैं मॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ एंड आई लुक्ड एट द PYQs, सो बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द PYQs आई नो कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पूरे इतिहास में क्या क्या हुआ है उतना यूपीएससी नहीं पूछता है. सो आई विल रिजेक्ट द स्टेटमेंट. Yes, I will make a mental note of it and I'll move on. So, in a way, having gone through the PYQs, it also helps you understand कि mocks के जो questions हैं, उसमें से validation कितना करना है, कितना नहीं करना है, किसको ignore करना है. And finally, I think with all of these lessons, you are ready to analyze PYQs and make the best use of them. एंड फाइनली एक और कोई क्वेश्चन आता है कि कितनी बार करी हैं PYQs. कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तो एग्जाम से पहले 7-8 बार PYQs किए हैं. लुक, PYQ में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसको कंसोलिडेट कर दिया है, उसको इंटरनलाइज कर दिया है, उसको रिपीट करके क्या होगा. उस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर ऑलरेडी आपके नोट्स में है या कहीं पे लिखी हुई है, आपने उसको याद कर रखा है, दैट इज वेल इनफ. आप 3-4 बार कर लीजिए PYQs. मैंने तो लास्ट ईयर एक्चुअली 2 ही बार किए थे. But what I did was I did try to identify areas where I could expand my knowledge. I did make notes from PYQs. I did revise them. I did revise my notes. And जो ये other areas where I can get ahead of the competition, उन पे मैंने focus किया था. So this was my strategy with respect to PYQs, and I hope this video was helpful. बाकी I also have a Telegram channel where I keep sharing whatever has worked for me. I've already shared a lot of things. उसमें आपको अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, just go to the pinned post. मैंने different sources, what to read. I have made some comparisons about different books that people use. I have also a document on frequently asked questions, so you can go through that. And you'll be very welcome if you have any questions. I'll take them up. Thank you so much for watching.